आर कंपनीज रियली बिकमिंग ग्रीनर या फिर ये सब बस ग्रीन वॉशिंग एंड मार्केटिंग टैक्टिक्स है? कैन इन्वेस्टिंग सेव द प्लैनेट व्हाइल मेकिंग यू रिच? और सबसे इंपॉर्टेंट, is sustainable investing the future or just a passing trend? So before getting into sustainable investment, let's break down the basics. What does investment actually mean? So an investment is purchasing an asset or item with the expectation that it will generate income or appreciate over time. एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझा जाए तो सेकेंड हैंड कार बेचने वाली कंपनीज कम पैसे में एक कार को उठाती है उसके ओनर से, उसको रिफर्बिश करके, उसको पेंट करके, उसके अंदर की मैकेनिज्म को चेंज करके, बाहर से उसको टॉप नॉच करके, एंड दे सेल इट टू द न्यू बायर, मतलब कि पुटिंग मनी इन विद द होप ऑफ गेटिंग मोर बैक. सो ट्रेडिशनली इन्वेस्टमेंट प्योरली फोकस ऑन फाइनेंशियल गेन्स, मतलब कि इन्वेस्टर लुक एट द फैक्टर्स लाइक कंपनी अर्निंग्स, प्रॉफिट मार्जिन और डेप्ट टू डिसाइड वेयर टू पुट देयर मनी. सो व्हाट इज द गोल? Maximize profit. But when we add the word sustainable with investing, the entire game changes. Now it's not just about financial return. उससे पहले, if you are new to this channel, welcome to Unique Global Education. We continuously make videos around finance career so that you can make an informed decision about your finance career. And if you have any query regarding your career after 12th, you can reach out to us through the inquiry form available in the description. So book your free career counseling today. We make you understand complex financial topics in an amazingly simplified manner so that your concept is clear. So today we are here diving into a topic that reshaping the investment world. So sustainable investment incorporates ESG, environmental, social and governance. These factors create long-term outcomes. Simple शब्दों में कहा जाए तो it's about investing without actually compromising the future. तो चलिए पहले ESG को ब्रेक डाउन करते हैं. पहला आता है environmental. तो सिंपल शब्दों में it's about how company manage their carbon footprints, waste and contribution to tackling climate change. Second comes very important, which every organization is focusing on in order to get growth, which is social. How they treat their employees, maintain diversity, and how they engage with communities. The third comes governance, ensuring transparent leadership, ethical tax policies, and measures to prevent corruptions. चलिए ठीक है, there are 3 points. But why it is important? Because when investor considers ESG factors, they contribute to building a more sustainable and equitable world while still pursuing financial returns. चलिए अब बात करते हैं very important aspect, the jobs in sustainable investing or ESG. समय के साथ sustainability becomes a key consideration in finance. The job market is evolving and there is a growing demand of professionals जो कि ना सिर्फ ट्रेडिशनल फाइनेंस को समझे मगर सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान दे. चलिए बात करते हैं कुछ एक्साइटिंग करियर पाथ्स की जो इस ESG सर्टिफिकेशन के थ्रू मिलता है. सो द ESG जॉब मार्केट इज बूमिंग. सो जैसा कि समय के साथ सस्टेनेबिलिटी एक टॉप प्रायोरिटी होते जा रहा है फाइनेंस वर्ल्ड में, उसके साथ कई नए करियर और जॉब अपॉर्चुनिटी इमर्ज कर रहे हैं. कंपनीज आर सीकिंग फॉर दोज इंडिविजुअल्स एंड प्रोफेशनल्स हु अंडरस्टैंड बोथ ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी. सो द फर्स्ट कम कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रोल्स. सो दीज प्रोफेशनल्स हेल्प द कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इंप्रूव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इमेजिन करो आप एक टॉप फैशन ब्रांड के साथ काम कर रहे हो एंड दे स्विच टू इको फ्रेंडली मटेरियल. They reduce the water waste. As we are aware that clothing companies require ton of water in order to produce few limited number of clothes. So a company which is cutting down the water waste and improving the working conditions. So the next comes sustainable finance consulting. So companies needs financial experts who can incorporate ESG in their financial strategies. Example के तौर पे a consultant might help a real estate firm secure funding for energy efficient building, proving that sustainability is also profitable. The next come ESG analyst. ESG एनालिस्ट कंपनीज पे रिसर्च करते हैं और उसको असेस करते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि कंपनीज के डिसीजन एथिकल एंड सस्टेनेबल वैल्यू को अलाइन कर रहे हैं. एग्जांपल के तौर पे समझा जाए, एक बैंक का ESG एनालिस्ट केयरफुली रिव्यू करता है बिजनेस को, ये इंश्योर करता है कि लेबर प्रैक्टिसेस फेयर हो रहे हैं और कार्बन इमिशन कम हो रहा है. नेक्स्ट कम सस्टेनेबल फाइनेंस लीडर्स. सो दे टेक चार्ज ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज दैट अलाइंस फाइनेंशियल ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी गोल्स. एग्जांपल के तौर पे अ फाइनेंस लीड एट एन इन्वेस्टमेंट फर्म माइट लॉन्च अ ग्रीन फंड इन्वेस्टिंग इन कंपनीज focused on renewable energy and climate solutions. The next come policy making. Policy making is not only for the private organization but also for the government. So government seek professional who can make policies to shape industry-wise sustainable standards. Example के तौर पे government
गवर्नमेंट एक डिसीजन ले सकती है that a company needs to submit their carbon footprint report and take action in order to reduce it. With businesses and financial institutions prioritizing ESG, the demand of these roles are skyrocketing. Whether you are passionate about finance and sustainability or both, this is your time to make an impact. Which ESG course excites you the most? Let us know in the comment section below. And that is not all. The demand of sustainability expertise is growing in every field possible. Talking about agriculture, implementing sustainable farming techniques, corporate services, strengthening governance and social responsibility, design and architecture, promoting green building practices, energy sector, leading the transition to clean energy, manufacturing, enhancing supply chain transparency and eco-friendly production, public administration, creating policies for climate action and social equity. So the future of finance is green. As industries prioritize sustainability, finance professionals must adapt. My dear, understanding ESG principles is no longer an option. It's essential for long-term success. Whether you are in accounting, auditing, compliance, or investment management, integrating sustainability into your field can maximize your chances of success and open doors of exciting opportunity that you have never thought of. Thank you for joining me in exploring sustainable investing. And if you have any query and you want detailed explanation about this course, book a free career counseling session today. You can reach out to us through the inquiry form available in the description. Till then, keep watching Unique Global Education. I'll see you in the next video.